नमस्कार दोस्तों। आज 17 अप्रैल 2025 है और आज यह दिन ओडिशा और पूरे देश के लिए एक दुखद है। यह दुखद इसलिए है क्योंकि आज ही के दिन 1997 में स्वर्गीय बीजू बाबू ने अपनी आखिरी सांस ली थी। इस सिलसिले में उनके द्वारा उड़ीसा विधानसभा में दिए गए आखिरी स्पीच को लेकर हम आपके समक्ष आ रहे हैं। 28 जून 1995 को बिजू पटनायक जी ने अपनी आखिरी स्पीच उड़ीसा विधानसभा में दिया था। 1997 में अपने देहांत के समय वह एक सांसद थे, पर उससे पहले 1995 में वे उड़ीसा विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन थे। यह स्पीच महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इस स्पीच में उन्होंने स्वयं खुद 2 बार बोला था कि यह उनका आखिरी स्पीच हो सकता है। स्पीच के बिगिनिंग में उन्होंने कहा कि माई लास्ट अटेंडेंस ऑन ए बजट सेशन ऑफ दिस हाउस प्रोबेबली इट विल बी, एंड इट वाज। एंड स्पीच के अंत में भी उन्होंने एक बार कहा कि प्रोबेबली माई लास्ट इन दिस हाउस, इन दिस असेंबली एंड इन दिस बजट सेशन। यह स्पीच सरकार, ऑपोजिशन और नए चुने हुए विधायकों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह पूरे उड़ीसा को एक रास्ता दिखाता है। इस स्पीच में बिजू बाबू ने लोगों को ड्रीम के बारे में बात की है और उन्होंने सरकार से कहा है कि आप चुन कर आए हैं, लोगों को आपसे उम्मीद है, आप उनके लिए काम करें। वो कहते हैं कि आई डू नॉट हैव द ड्रीम्स बट द पीपल हैव ड्रीम। दे एक्सपेक्ट सो मेनी थिंग्स फ्रॉम यू बिकॉज दे हैव चेंज द गवर्नमेंट। दे एक्सपेक्ट मच फ्रॉम यू। और शायद यही सिचुएशन आज भी है। सरकार 100 दिन पूरे होने पर, 6 महीने पूरे होने पर, 9 महीने पूरे होने पर यह बताती है कि हमने ये किया, वो किया। इस सिलसिले में भी बिजू बाबू कहते हैं कि इट्स नॉट एनफ टू हैव दिस वन अप एंड सिप्स इन वन डे। आई हैव डन दिस इन 100 days. I have done that and all that type of calm things that I have seen for last 45 years. That is only poppy talks and that has no value at all. For me, at least, that has not. For the people in general, it is not. He was not concerned about his win or loss in the election. वो कहते हैं कि गवर्नमेंट कम्स एंड गवर्नमेंट गो इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप। और वो आखिरी में भी कहते हैं कि गवर्नमेंट गोज वन आफ्टर अदर। पर वो ज्यादा कंसर्न इसलिए थे कि उड़ीसा को कैसे एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन में रहते हुए वो सरकार को मदद कर सके। इस सिलसिले में 3 या 4 बातें उन्होंने इस स्पीच में की है, जिसको हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं। सबसे पहले वे उड़ीसा के ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात करते हैं। देश में ऐसे कुछ ही लोग होंगे जो हिटलर की लीडरशिप के बारे में बात करते हैं कि हाउ जर्मनी बिल्ट अप आफ्टर इट वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। हिटलर प्रोवाइडेड देम अ लीडरशिप to the people who was agreed to work for 12 hours on the wage of 6 hours. He says, in this way the empire of Kalinga was built when we could conquer throughout and throw out the Greek kings from the Mathura right beyond the Hindu Kush. That is our buniyadi or the background. We have forgotten that. So he believes in the human resource of the Odisha. He believes that the people are capable of doing anything. They don't require any central assistance. जैसे अभी हमने हाल में ही देखा कि अनसीजनल रेनफॉल हुआ और सरकार सेंटर के पास दौड़ गई सेंट्रल असिस्टेंस के लिए। क्यों? Isn't Odisha capable of providing assistance to their farmers? He says, you talk of central assistance. I have to inform you, sir. When Kalinga built its empire, there was no central assistance. We assisted ourselves. We conquered nation after nation. We assisted ourselves. We went to Java, Bali and Sumatra to get built our empire.
There was no planning commission. There was no one. We did everything of our strength, our own dreams, that is 2000 years back. And now we are dependent on the center for getting central assistance. In the end, he knows the truth that what is central assistance. In this regard, he says, they did not accept it because they are bothered about the states which are rich, which are powerful. States like Odisha is not counted. Why you do not understand? This is simple truth. You can only grow up when you will build your own steel plant, when you will build your own power plant, when you will build up your canals and the other things and show to the world, here we are, I am Odisha, this is what to do. But what we are doing now, we are handing everything to the private corporates at the cost of what? At the cost of suffering to the people. Odisha is still one of the backward states in the country, lagging behind on all parameters of sustainable development goals. Whether it is per capita income or the health facilities, it is one of the lowest in the country. Because we are giving the Odisha resources to the corporate at no cost. And we are getting in return the pollution. Rivers are drying up. There are health hazards. He also gives away that how Odisha can build itself. In this speech, he talks about the royalty on the minerals. He says, but what is due to us royalty on coal, royalty on chrome ore, which could give us every year something of order 2,000 to 3,000 crores. That is denied to us for 4 or 5 years. This was 30 years back. And how much coal was produced at that time? Merely 20 to 30 million ton. And how much now Odisha produces every year? It's 240 million ton. Back then, when 20 to 30 million ton, he was in a view of getting 2,000 to 3,000 crore. But after 30 years, when Odisha producing 240 million ton, 12 times, and how much we are getting in royalty? It's 3,800 crore, only 4,000 crore. Twice what he said that time. But the production is 240 million tons, that is 12 times of that time. If you take example of West Bengal, today also West Bengal produces only 20 to 30 million ton, and by imposing 25% cess on them, they are generating 1,000 crore. And how much Odisha is taking royalty on that? 14%. And it's producing 240 million ton. And apart from that, how much it is using? Only 20 million ton. And chromium is only present in Odisha. 100% reserve of chromium is in Odisha. By imposing cess and taxes, Odisha can generate 2 lakh crore annually. And why the state is not imposing cess and taxes on the minerals and minerals bearing land, even after the Supreme Court allowed it to do so in its order of 25th July and 14 August 2024. People are watching it. These are not my words. It's the Biju Babu word. He says, I am advising you, you do not make false promises, because people are there. People are looking out. This is people. They are the master. Do not please forget, your MLAs and your ministers are not masters. I am not master. People are masters. Do not irritate them. Do not make them angry. Do not make them lose confidence, whatever little confidence they have on you. Because if you do things like this, if you carry on like this, go on bluffing people, I am in doubt, you will not last long. Thank you.